evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमसे खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन राय। उदयन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम उदयन। धन्यवाद मनोज, थैंक यू राजेश। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stocks slip marginally. Sensex closes at 58,279. Nifty finishes at 17,362. Rupee weakens 32 paise against the US dollar amid appreciation in the American currency. And global equity markets trade mixed. घरेलू शेयर बाजार में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 58,279 पर बंद हुआ। निफ्टी 17,362 हुआ दर्ज। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 के तुलना में रुपया हुआ 32 पैसे कमजोर और दुनिया भर के शेयर बाजारों में दिखा आज मिला जुला रुख। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 3 सत्रों से लगातार जारी तेजी का सिलसिला आज थम गया और प्रमुख सूचकांक मामूली घाटे के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 17 अंक यानी 0.03% कम होकर 58,279 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 16 अंक यानी 0.09% नुकसान के साथ 17,362 दर्ज हुआ। उधर छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की बिकवाली भी तेज रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.23% घाटे में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.42% की गिरावट हुई। The Sensex and the Nifty today slipped marginally. The BSE Sensex fell 17 points or 0.03% to finish at 58,279. The NSE Nifty also ended 16 points or 0.09% down to 17,362. In the broader market at BSE, the mid-cap also fell 0.23% and the small-cap index ended 0.42% down. In the Sensex pack, shares of 12 companies gained while 18 logged losses. HDFC was the top gainer as it surged 2.6%, followed by Bharti Airtel, which gained 2.5%. ITC climbed 1.2% and IndusInd Bank surged 1%. On the other hand, Sun Pharma declined 1.8% and Tech Mahindra fell 1.7%. Axis Bank fell 1.6% while HCL and Infosys both slipped 1.4%. In sectoral indices, 6 sectors logged gains while 13 fell. Telecom gained 3.1% and consumer goods surged 1.3%. On the other hand, realty plunged 2.2% and IT declined 1.2%. Utilities and oil and gas both slipped 1.1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,283 companies gained while 1,898 fell. Shares of 136 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 32 पैसे कमजोर हुआ। 73 रुपए 45 पैसे के स्तर पर आ गया। डॉलर में मजबूती आने से रुपए में यह गिरावट देखने को मिली। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में आज समाचार तैयार किए जाने तक 0.32% बढ़कर 92.33 पर पहुंच गया। उदयन, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। बाजार में आज कई अवसरों पर तेजी का रुख था, हालांकि बहुत बड़ी तेजी तो नहीं थी, लेकिन तेजी का सिलसिला दिख रहा था। आखिरकार ये मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को? मनोज, ये कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है, एक कंसोलिडेशन हुआ है। प्रॉफिट बुकिंग मतलब आपको लगता है कि मार्केट काफी अच्छा रन अप कर गया, अब प्रॉफिट बुक कर लिया जाए।
ताकि मार्केट का अगले मूवमेंट से पहले आपको उसका पीछे रन अप का फायदा हो, वो एक। दूसरा है थोड़ा कंसोलिडेट किया जाए, कुछ और इलाकों में देखा जाए, रोटेट किया जाए अपने निवेश को, तो आप नए कुछ सेक्टर्स की तरफ आप नजर डालेंगे। तो कुछ चर्चाएं हो रही कि कुछ इंजीनियरिंग टाइप के जो स्टॉक्स हैं जो इस टाइप की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप ऑफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, वहां उस तरफ देखा जाए। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से जो मार्जिनल जो ड्रॉप के बारे में बात की आपने वो दर्शाता है। पर बाकी मनोज ऐसा है कि हमारे यहाँ पे जो लार्ज कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स, उनकी जो खबरें आ रही हैं वो ठीक ठाक हैं। हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन का रेट प्रोग्रेस अच्छा खासा चल रहा है, चिंता वाली कोई हेडलाइन नहीं आई है। पर कई और देश ऐसे हैं लीडिंग कंट्रीज हैं जहां पे इन्फेक्शन काफी जबरदस्त चल रहा है अभी भी। तो कुछ जो है हिसाब किताब हमारे यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज, दूसरी जगह से उतना अच्छा न्यूज नहीं। तो कुछ जो ये आप जो स्विंग्स देख रहे हैं, जैसे मूड स्विंग्स होते हैं लोगों के, वैसी मार्केट की कुछ स्विंग्स इस तरीके से आप देखते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ वन वे मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट दिखेगा, थोड़े स्विंग्स होंगे। एंड फाइनली जब फेडरल रिजर्व अपना निर्णय लेगा टेपरिंग का, तब एक अलग स्टेज में मार्केट पहुंचेगा। Okay, we'll be taking a short commercial break at this point of time. Udayan, stay with us. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back. Then before we took the commercial break, you were talking about the large caps and you were talking about the consumer sentiment. So my first question to you is about the large caps. They have been in the limelight, as you very rightly said, and the top 100 firms gained from cost efficiency and pricing power. Aren't the enhanced EBITDA margins and profits making big corporations bigger? So shouldn't they be looked at with great interest by the investors going forward? Absolutely, Rajesh, you're so right. See, Rajesh, what typically happens in types of these upheavals, if we can call the pandemic an upheaval, which it is not. It is almost like a tsunami. It's not just like a mean upheaval. What typically does is the strong, they have a better chance of seeing it through, which has already happened. And when things get normal or things are heading towards normal, they just get even stronger. Whereas the weaker get weaker and almost in many cases they fold up or get obliterated. So you would be actually seeing a lot of M&A happening, mergers and acquisitions actually happening, companies actually getting phased out. There's a lot of unorganized sector entities who are not effective or they're probably gone out of business. So what's happening is they're really becoming the big are really becoming bigger. So there are pluses of such things and there are also minuses. And then you have got competitive issues out there. But yes, of course, because larger becoming larger, you would be interested. But Rajesh, the other point is when you are if you think the large caps are becoming overvalued, then you will look at opportunities in other areas, which has been happening. And as the markets keep progressing, you will see these phases where people are getting into the mid cap and small cap and looking for new, value propositions or new business or investment stories. उदयन, हम आपका ध्यान आज के कारोबार में खासतौर से टेलीकॉम सेक्टर पर ले चलना चाहेंगे। वहाँ 3% से अधिक की बढ़त हम देख रहे हैं। कोई खास कारण रहा जिसके चलते इस क्षेत्र में बढ़त हुई है?
मनोज, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि कई निवेशकों का मानना है कि वोडाफोन के लिए कोई पैकेज आने वाला है या कुछ ऐसी पॉलिसी ट्वीक होगी या कुछ किया जाएगा जिससे वोडाफोन आइडिया की जो एंटिटी है वो करंट जो मुश्किल हालात से गुजर रही है, मुश्किल दौर से गुजर रही है, उसको थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा और किसी तरीके से वो इस मुश्किल की घड़ी से वो निकल जाएंगे। और इस उम्मीद की वजह से काफी कुछ इंटरेस्ट या अपमूव या इन्वेस्टमेंट हो रहा है और आप देखेंगे वो सुर्खियों में भी है कंपनी, क्योंकि वहां पे बातचीत भी आ रही है। तो हेडलाइन क्योंकि ग्रैब कर रहा है, वो सीधा जाके इन्वेस्टर सेंटिमेंट और इन्वेस्टर एक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। Okay, you talked about telecom. I'm going to be talking about the consumer sentiment, which you mentioned a while back. So the basic requirement for any sort of tailwind on the economy to happen is to have a good consumer sentiment. And for it to be sustainable, it will have to have ripple effect on many sectors. So how many more pockets are looking attractive to you? I can think about rural, which was very good. Now, which are the ones, according to you, that one can look at and which can lift the consumer sentiments going forward? Rajesh, as I was mentioning a little earlier, there have been some discussions, some institutional investors have come up with some reports where they are talking about some of these engineering sort of firms which are into engineering projects, basically in construction and infrastructure. And they're pointing out to some of their export performances and, of course, their growth. I mean, they're talking about their recent, the fact that the recovery or the deflation or whatever you want to call it, they seem to be getting some level of momentum, and they have a they're pointing out that may be one area. The other, of course, is consumer durables, because what some of the experts are arguing that maybe some of the consumers or a significant section of consumers have actually deferred their consumer spending, and the coming festival season, because the finance firms and other people, banks, etc., are all ready to facilitate. So you might just see a little bit of a bounce out there in terms of consumer durables. So these are the two areas which actually people are right now talking about. श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम। विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। श्रोताओं, एक और जहां टेलीकॉम सेक्टर में आज 3% से अधिक की बढ़त हुई है, वहीं रियल्टी सेक्टर में 2.2% की गिरावट भी हुई है। उदयन, हम समझना चाहेंगे रियल्टी में क्या मुनाफा वसूली का असर है या कोई और खास कारक? मनोज, इस बारे में मेरे को भी बहुत क्लियर आइडिया तो नहीं है और मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हाँ, मुनाफा वसूली एक कारण हो सकता है, पर मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि और क्या कारण हो सकता है जो ऐसा कुछ लॉजिक जो मेरे को कन्विंस करे। पर मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरे पास दूसरा कोई रीजनिंग मैं दे नहीं पा रहा हूँ, बट आई एम श्योर उसमें मुनाफा वसूली एक कारण जरूर रहा होगा। हम रुपए पर आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। रुपए में आज बड़ी गिरावट हुई है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डॉलर थोड़ा सा मजबूत हुआ है, यही एक कारण है, या रुपया फिर से गिरावट की ओर बढ़ता आपको दिख रहा है। 31 पैसे कमजोर हुआ आज रुपया और 73 रुपए 45 पैसे के स्तर पर आ गया। 32 पैसे दरअसल रुपया आज कमजोर हुआ है डॉलर की तुलना में। देखिए, एक तो आपने कारण बताई दिए, डॉलर मजबूत हुआ है। इनफैक्ट अनलेस आई एम रॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है शायद लेटेस्ट खबरों में आपको शायद मालूम चलेगा कि यूरो भी अच्छा कर रहा है, ठीक है। पर इसके अलावा
जो ये मुझे टेम्पररी नजर आता है, क्योंकि जैसे कि आप तेल की खबरों में पढ़ेंगे, वहां पे थोड़ी सी नरमी की उम्मीद है तेल के दामों में, क्योंकि वहां पे कुछ प्रोडक्शन कट्स के बारे में बातचीत हो रही है, ज्यादा प्राइस कट्स के बारे में बातचीत हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ट्रांजिटरी है। हमारे जैसे कि हम जानते हैं, हमारे फॉरेक्स का, फॉरेन एक्सचेंज का, डॉलर्स का खर्चा हम काफी कुछ तेल आयात में करते हैं, तो वहां पे अगर थोड़ा सी हमें राहत मिलती है तो ये जो है, ये आंकड़ा जो आज ये थोड़ी गिरावट आई है, वो शायद बाउंस बैक कर जाए। तो मुझे ये ट्रांजिटरी लगता है। पर हम लोग तेल के दाम की वजह से वहां पे हमारा जो करेंसी है, रुपया जो है, वो इस साल पूरे साल ही जितना रहता है वो प्रेशर में जरूर रहेगा। So then we are in an earnings upgrade cycle, and if the revenue and volume growth are strong, that takes care of pretty much everything. So what will be the next trigger of the market? Well, Rajesh, there are still areas where things have to really perk up. All kinds of services. So if people were giving tuition, for instance, okay, there's a large tuition center or tuition centers across the country. They are obviously not. One can argue that online classes, etc., are happening, but everybody doesn't have that kind of digital access. So then there is tourism. Then there are all kinds of services. So Rajesh, it's often we overlook the fact that more than 50% of our GDP comes to services, and people-to-people contact, when it's sort of cut off or it's restricted, that's what gets affected the most. So as we keep opening, as we get the pandemic and these infections under control, you'll find those activities coming through, things that people were not doing, they'll start doing it again, they'll start feeling confident. And so we have got that huge upside waiting for us. And till that gets exhausted, we do have quite a bit of gas in the tank to take our vehicle ahead on the expressway. Okay, we'll continue our discussion with Udayan after this short break. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे, कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया, अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back. Udayan, on almost every valuation count, Nifty 50 has been trading above its historical averages despite a slip that we observed today. What would your advice be to the investors? To be cautious as you go along, or should they be gung-ho, believing that the strong liquidity globally may last at least 6 to 7 months? It's a good point, Rajesh. So people can think about what they would do when they go to a marriage and eat. Okay, in a marriage party, you've been called to a marriage party, and a spread has been laid out, and you're invited to have food, etc. Now you're going to not have triple the food, right? So you eat as much as you can. Yeah. I mean, you might have a little more, but you're not going to have triple. So you want to probably, you might order some food at home or make some great dishes at home. So compared to that, things you're celebrating, you're not going to have more, more in a crazy sense. So what I'm trying to drive home the fact is that when you are actually investing, it's not very different. A market is supposed to be, there are going to be highs and lows, etc. So it's almost like, being in a boat in a sea. So it's going up and down. So whatever you're doing when you're on top of the wave, you'll do and it's going, the wave is, you're on the downslope of the wave. You will do a similar thing, the patterns of your activity will remain the same. So basically, you just have to follow the basics, what I'm trying to emphasize here. And you just look at the story and how the performance has been. Would you like to be associated
with that company. So if you're buying a product of a particular company, you use it, you like it, that is the company where you should be looking at for investment. So, we know of gurus who have said that, the things that you use, those are the things that, you should be investing in. So these are small tips, if you don't need the money day after tomorrow, then, don't get out of the market, don't try to do anything clever. And, be consistent in investment. Don't put money in one kind of area. Say, just put all your money in IT stocks or whatever. Because any risk that is related to that particular sector, you'll get affected. So you have to spread your eggs a little bit, relax, and, you don't have to check how the markets are doing, 24 hours a day. So if you do that, sometimes what happens is, Rajesh, is people analyze and over track. You don't have to do anything special. Just do it as if it was a regular scene. And because if you're investing in stocks, you shouldn't be looking at buying and selling. I mean, if you're a long-term investor. If you're a trader, then I have nothing to offer in terms of advice. But if you're an investor, then you want to be part of that company and make sure that they contribute to your prosperity. So it's a partnership. So you have to look a little beyond 4 or 5 years, and you want to be there. And review it whenever you need to review. If you need some money and the stock has done well, fine. Otherwise, there's nothing special you need to do. उदयन, यदि हम सेक्टर को समझना चाहें कि जो वर्तमान परिस्थितियां रही हैं बीते कह लें कि पूरे कोविड काल में और आने वाले जो अवसर उत्पन्न हो रहे हैं उसे ध्यान में रखते हुए कौन से ऐसे सेक्टर हो सकते हैं जिनमें 1-2 वर्षों के निवेश का बेहतर लाभ हमारे जो छोटे कह लें कि निवेशक हैं, श्रोता हैं, उन्हें उम्मीद रखनी चाहिए कि यहाँ प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रह सकता और अभी जो प्राइसिंग है वो आकर्षक दर पर उन्हें उपलब्ध है? देखिए मनोज, हमारे देश में आईटी सेक्टर का स्ट्रेंथ तो बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड है. हाँ, उसके कुछ चैलेंजेस हैं, पर वहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे देश में अगर आगे बढ़ना है तो हम आईटी में बेहतर नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो वो एक सेक्टर जरूर हुआ. दूसरा है कि हमें थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा बैंकिंग एंड फाइनेंस में, जिनके स्टोरीज अच्छे हैं, जहाँ पे एनपीए वगैरह लोन का स्ट्रेस कम है, बेहतर मैनेजमेंट हो रहा है, ग्रोथ अच्छा चल रहा है. क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, आपकी अगर आर्थिक वृद्धि होगी, तो वो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की सहायता के बगैर हो ही नहीं सकती. तो जहां आप और फिर रह गया आपके कंज्यूमर, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स. देखिए, चाहे वो मंदी हो या तेजी हो, सब दाढ़ी जरूर बनाएंगे, बिस्किट जरूर खाएंगे, बनियान सभी पहनते हैं. तो ऐसे स्टोरीज की तरफ देखा जाए जहाँ पे हमें मालूम है कि कंपनी को लाभ भी होगा और उनकी जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ रहा है. श्रोताओं, यहाँ पर एक बार फिर से हम लेना चाहेंगे छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र. बने रहिए हमारे साथ. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया. सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया. ओहो, तो ये बात है. हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे. बड़े भैया छोटे. भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी. आइए अब चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर. सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां दक्षिण कोरिया को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर लिवाली तेज रहे. निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1.5% लाभ में रहा. जापान के निक्की 225 सूचकांक में 0.9% की वृद्धि हुई. हांगकांग का हैंग सेंग 0.7% ऊपर आ गया. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% तेजी के साथ बंद हुआ. उधर बिकवाली के दबाव में दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% नीचे आ गया. यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां गिरावट का रुख दिख रहा था. अंतर्दिवसीय कारोबार में ब्रिटेन का FTSE 100 और जर्मनी का डेक्स दोनों सूचकांक 0.2% नीचे चल रहे थे, जबकि फ्रांस का CAC 40 बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर के आसपास बना हुआ था. US markets were closed yesterday on account of Labor Day. And Udayan, my question to you is about the turbulence in China
After that, that has been in the market of China, there has been resilience. And that has also been caught by the emerging markets. Today, China's Shanghai Composite climbed 1.5%. So what's the learning here? Well, there are two learnings, Rajesh. One is that these are markets. Okay, so then it's not like a fixed deposit, it will just, the money will grow and the value can only grow, So if you're tracking on a real-time basis, there will be fluctuation, and there are other factors. And like every stock markets of every country, there will be ups and downs. So we saw how the wave of infections, shall we say, the increasing number of infections in China actually impacted their economic activity and also the consumer sentiment. But we also know the important role China plays in the global economy in terms of manufacturing and the kind of linkages, very strong linkages it has with the Far East and Australia and of course US and the rest of the world. So therefore that bedrock, that fundamental is very solid and it will continue to be an engine of growth. But when it does very well, then you will see added optimism. Moving on, oil prices were mixed today as some investors scooped up bargains following recent losses. Saudi Arabia's sharp cuts in crude contract prices for Asia also sparked fears over slower demand and weighed on sentiment. In intraday trade, Brent crude was trading around $72 per barrel, while WTI crude prices were at $68.50 per barrel. नजर डालें सर्राफा बाजार पर। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक फीकी रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य आज 110 रुपए घटा 47,315 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। उधर सितंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 735 रुपए कम होकर 64,560 रुपए प्रति किलो के स्तर पर फिसल गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने का मूल्य थोड़ा सा कमजोर हुआ, $1,811.60 प्रति औंस पर आ गया। चांदी भी थोड़ी सी कमजोर होकर $24.30 प्रति औंस के स्तर पर आ गई। यहाँ पर बहुत संक्षिप्त सी प्रतिक्रिया हम आपकी लेना चाहेंगे सोने और चांदी पर, खासतौर से सोने की चमक पर। किस दिशा में सोने की दशा बन रही, यानी दाम इसकी चमक तेज होने के आसार हैं या बहुत संक्षेप? मनोज, इसमें सारा डिपेंड करता है सबसे पहले डॉलर और सोने का इनवर्स रिलेशनशिप रहता है, तो वो एक है। और दूसरा है कि कोई अगर बहुत नेगेटिव खबर नहीं आती, नेगेटिव खबर आती तो तब ये प्रॉब्लम आ सकती है। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। थैंक यू उदयन। Before we close, the headlines once again. Domestic stocks slipped marginally. Sensex closes at 58,279. Nifty finishes at 17,362. Rupee weakens 32 paise against the US dollar and global equity markets trade mixed. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market